Assalamualaikum everyone. So today I'll be teaching Midbrain. So इसमें starting off आज की वीडियो में I'll try कि मैं Midbrain का बता दूँ और as well as inferior colliculus level का जो section है उसको cover up कर दूँ. So Midbrain को we know अगर मैं starting करूँ इसके front portion से और posterior view से, तो we know कि जो front वाला portion है इससे मैं आपको एक picture दिखाती हूँ from the book. Currently I wish I could show it from the atlas, लेकिन sorry. So इसमें basically इस तरह है कि front पे we have ये जो आपको ये middle में ना इधर बिल्कुल front में this is the front view. तो यहाँ पर there is a fossa, we say कि वो interpuduncular fossa है और sides पे crus cerebri visible होते हैं. अब सो दिस इज़ द फ्रंट वाला व्यू, ठीक है. इसको अगर मैं थोड़ा सा मैंने अगर खुद ड्रॉ किया है तो उसमें बेसिकली दिस इज़ हाउ इट इज़. तो ये जो ट्रायंगुलर टाइप शेप है ये इंटरप्यूडंकुलर फॉसा है और वी से कि इट इज़ इंटरप्यूडंकुलर बिकॉज के दोनों प्यूडंकल्स को कनेक्ट कर रहा है और इसके दरमियान में एक डिप्रेशन है या फॉसा है और इधर यू हैव क्रस सेरेब्री. ऑलराइट. सो और जो पोस्टीरियर व्यू होता है, पोस्टीरियरली बेसिकली हम इस तरह होता है कि आप कुछ ना स्वेलिंग्स होती हैं, वी से देम कि वो कॉलिकुलस है. ये जो मैंने आपको फ़ोटो दिखाई थी ये फ्रंट व्यू था एंड पोस्टीरियरली दिस इज़ अ नाइस पिक्चर. सो दिस इज़ ये जो पोर्शन है ये मिड ब्रेन का पोर्शन है. सो इसमें वी नो कि इफ़ वी हैव 4 बिग स्वेलिंग्स, बिग मैसेस होते हैं. इसमें जो अपर वाले होते हैं दे आर कॉल्ड सुपीरियर कॉलिकुलस और जो लोअर वाले होते हैं दैट्स इंफीरियर कॉलिकुलस. ओके, सो हेयर आई हैव शोन इट. तो 2 सर्कल्स होते हैं ऊपर वाले, दे आर सुपीरियर कॉलिकुलस और जो लोअर वाले होते हैं वो इंफीरियर कॉलिकुलस होते हैं. सो जो सुपीरियर इंफीरियर कॉलिकुलस हैं दे बोथ हैव डिफरेंट फंक्शंस. जो सुपीरियर कॉलिकुलस है इट्स मेनली मोर ऑफ लाइक विजुअल रिफ्लेक्सेस के साथ होता है और जो इंफीरियर होता है वो आपकी हेयरिंग या ऑडिटरी से होता है रिलेटेड. नेक्स्ट, द मिड ब्रेन इट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: टेक्टम, tegmentum एंड क्रस सेरेब्री. उसकी डिवीज़न बहुत मज़े के वे से होती है. वेल नॉट दैट मच. सो हाउ इज़ इट, बहुत डिफाइनली वो डिवाइडेड है. उसमें इस तरह होता है कि यहाँ पर वी हैव ए थिक मैस होता है बहुत डार्क ब्लैक कलर का. वी से कि उसमें देयर इज़ टाइटली प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन्स जिसकी वजह से एक ब्लैक कलर का प्रॉपर फॉर्म हो जाता है और इसमें मेलानिन डिपॉजिटेड होता है. सो ये वाला जो पोर्शन है ये बेसिकली एंटीरियर है और ये वाला है ना ये पोस्टीरियर है. इवन दिस इज़ अ बेटर पिक्चर. तो बेसिक ये वाला जो है ना सारे ये वाले हमारे पास एंटीरियर आते हैं और ये वाले हैं पीछे ये पोस्टीरियर में है. ओके, एंड देन ये पॉन्स है एंड मिडिल है. सो वे वाज आई या सो और वो जो ब्लैक पोर्शन होता है इट हैज़ ए स्पेसिफिक नेम, उसको कहते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा. और अब बेसिकली जो इसके पार्ट्स हैं वो इस तरह हैं दैट जो सबस्टेंशिया नाइग्रा के आगे वाला पार्ट है जो एंटीरियर है दैट्स कॉल्ड एज क्रस सेरेब्री. क्रस सेरेब्री इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द बेस ऑफ द मिड ब्रेन. बिल्कुल इसी तरह पॉन्स में भी एक पार्ट होता था जिसमें बेस होती थी और टेगमेंटम होता था. सो जस्ट लाइक दैट जो एंटीरियर मोस्ट पोर्शन है इसका इट इज़ कॉल्ड एज बेस एंड द क्रस सेरेब्री. सो वी डन विद क्रस सेरेब्री. सेकंड जो होता है वो बेसिकली होता है कि अब क्रस सेरेब्री हो गया ना, उसके बाद ना मिडिल में देयर इज़ अनदर वी नो सेरेब्रल equiduct होती है जिसके अंदर सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड रन कर रहा होता है. सो ये जो सर्कल शो किया हुआ है दिस इज़ द सेरेब्रल equiduct. तो एवरीथिंग दैट्स प्रेजेंट जो सेरेब्रल equiduct के पोस्टीरियरली पार्ट प्रेजेंट है इट्स कॉल्ड द टेक्टम. So tectum is everything that's present posterior to the cerebral equiduct. और जो पीछे पार्ट बच गया that's tegmentum. So this is covering the 3 parts of the midbrain. Next जो है ना उसमें ये होता है कि there is a word called cerebral peduncle. जो हमारे पास मिड ब्रेन जो होता है वी नो दैट ऑर्डर बेसिकली इस तरह होता है दैट वी हैव मेडुला, पॉन्स, फिर मिड ब्रेन आ जाता है. मिड ब्रेन के ऊपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है. सो बेसिकली जो मिड ब्रेन है उसके बिकॉज उसके अबव सेरेब्रल कॉर्टेक्स है तो जो हमारे पास मिड ब्रेन का एक हाफ पोर्शन है ना इट इज़ कॉल्ड एज लाइक राइट सेरेब्रल peduncle और ये वाला जो होगा इट वुड बी नोन एज लेफ्ट सेरेब्रल peduncles.
ऑलराइट, एंड मेक श्योर कि आप इन दो वर्ड्स को कंफ्यूज ना करें. जो मिड ब्रेन से ऊपर वाला पोर्शन है ना जिसको वो कनेक्ट करें उसको कहते हैं सेरिब्रल पेडुंकल्स. बट जो हमारे पास मिड ब्रेन को जो कनेक्ट करता है सेरिबेलम के साथ, उसके लिए देयर इज़ अ डिफरेंट वर्ड दैट्स सेरिबेलर पेडुंकल. सो जो मिड ब्रेन वाला होगा वो होगा सुपीरियर सेरिबेलर पेडुंकल. जो पॉन्स और सेरिबेलम को कनेक्ट करता है दैट्स मिडल सेरिबेलर पेडुंकल्स, एंड मेडुला विद सेरिबेलम इज़ कॉल्ड inferior cerebellar peduncle. और जो मिड ब्रेन वाला है इट इज़ कॉल्ड cerebral peduncle because it's connecting with the cerebral cortex. Alright, so this is a diagram जो कि काफ़ी डिटेल में colored view में शो कर रही है section of the midbrain at inferior colliculus level. इसमें I'll go very step by step. So first of all I'll be covering substantia nigra वाला part. जो सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं. जो दिस ये जो हम बेसिकली ब्लैक कलर का शो किया हुआ है दिस इज़ सब्सटेंशिया नाइग्रा. इसके दो पार्ट्स होते हैं. जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, लाइक आई मीन द पोस्टीरियर पार्ट इट्स वेरी कॉम्पैक्ट. वी कॉल इट स्पार्स कॉम्पैक्टा बिकॉज इसमें न्यूरॉन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली प्रेजेंट है. और जो इन्फीरियर पार्ट है उसके न्यूरॉन्स जो हैं वो काफ़ी डिस्पर्सली प्रेजेंट है. सो वी से कि दैट्स स्पार्स रेडिकुलरिस. दिस इज़ इट अबाउट सब्सटेंशिया नाइग्रा. अगर मैं इसके ओवरऑल डायग्राम में बात करूँ, एंड देन देयर इज़ अ डिज़ीज़ जो कि सब्सटेंशिया नाइग्रा के साथ रिलेटेड है विच इज़ पार्किंसन डिजीज़. नाउ लेट्स कम टू दैट. सो उसे एक्सप्लेन करने के लिए आई विल बी टॉकिंग अबाउट अ पाथवे. वी कॉल इट डोपानर्जिक पाथवे. बेसिकली ये जो ब्लैक पोर्शन, ये जो ब्लैक नज़र आ रहा है, दिस आई हैव शोन कि ये सब्सटेंशिया नाइग्रा है. और ये जो है ये सुपीरियर कॉलिकुलस है और ये इन्फीरियर कॉलिकुलस की स्वेलिंग्स हैं और ये मिड ब्रेन है. एंड दिस इज़ पॉन्स मेडुला एंड देन यू हैव योर स्पाइनल कॉर्ड. सो जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है इट इज़ प्रेजेंट एट बोथ द लेवल्स. ये सुपीरियर कॉलिकुलस पे अगर हम लाइन ड्रॉ करें उस पर भी प्रेजेंट है, एज वेल एज इन्फीरियर कॉलिकुलस पे लाइन ड्रॉ करें उस पर भी प्रेजेंट है. अब द थिंग इज़ दिस दैट जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है ऊपर देयर इज़ अ पार्ट, एक पोर्शन है बेसल गैंग्लिया. तो बेसल गैंग्लिया के कुछ पोर्शंस होते हैं, यू डोंट नीड टू नो देम अभी, लेकिन एनीवेज अगर ना भी पता होगा इट वुड गो ओके. सो देयर इज़ क्वाड्रेट एंड प्यूटामेन. Both of them are collectively known as striatum. So substantia nigra जो है ये basal ganglia के साथ connected है through some neurons, and what these neurons do is this, that they release dopamine. Cause they release dopamine, hence this pathway is called as the dopaminergic pathway. अब or as well as dopaminergic pathway भी कहते हैं, and there is another name given to it which is called nigrostriatal pathway. Nigrostriatal इस वजह से कहते हैं cause इट्स कमिंग फ्रॉम कि ये जो है ये सब्सटेंशिया नाइग्रा है. सो नाइग्रो और क्वाड्रेट और जो बेसल गैंग्लिया के जो सब पार्ट्स होते हैं क्वाड्रेट एंड प्यूटामेन, इनको कलेक्टिवली कहते हैं स्ट्राइडम. सो इट्स नाइगोस्ट्राइडल पाथवे. दैट्स हाउ नाइगोस्ट्राइडल पाथवे द वर्ड कम्स फ्रॉम. नाउ अनदर थिंग इज़ दिस कि वी नो कि जो सब्सटेंशिया नाइग्रा एज आई ऑलरेडी मेंशन कि वो बेसल गैंग्लिया में डोपामीन रिलीज़ करता है. अब if there is some kind of disruption in this pathway, कोई degeneration हो जाए इस pathway में, कोई deficiency हो जाए dopamines में, so it leads to a disease which is, there you go, Parkinson disease. So Parkinson disease की दो reasons हो सकती हैं. There can be any defect in this pathway, और दी अदर इज़ दिस कि लेट्स से अगर कोई ऐसी ड्रग्स हैं जिसकी वजह से जो हमारे पास बेसल गैंग्लिया के जो रिसेप्टर्स हैं वो एक्ट नहीं कर पा रहे डोपामीन पर, दे गेट डैमेज. तो अगर वो रिसेप्टर्स डैमेज हो जाएंगे तो ऑब्वियसली वो डोपामीन को के इफ़ेक्ट नहीं हो पाएगा, एंड देन अल्टीमेटली you will have a disease which is Parkinson disease. What really happens in Parkinson disease, so they're just overall थोड़ा सा बताया है. इसमें हमारे पास hypokinesia हो जाता है, there is rigidity, resting level पे भी tremors हो रहे होते हैं, and as well as there is loss of postural reflex. So next comes the portion जो कि basically is present ahead of the substantia nigra. I already told you guys that the part which is present ahead, anterior to the substantia nigra, we call it Crus Cerebri, which is shown in green here,
I made sure that I represented here in green as well. So so this is the crus cerebri portion. Crus cerebri वाला जो portion होता है उसमें mainly जो like आपका जो anterior portion है ना, which is present ahead of the substantia nigra, उसमें downgoing fibers होते हैं. With downgoing, what do I mean with that? I mean descending fibers होते हैं. Descending fibers which basically goes from the, which are coming like ऊपर से, from the cerebral cortex या किसी भी और ऊपर वाले level से downwards, down to the spinal cord या कहीं midway में. I'll be talking about, so anteriorly we have the downgoing fibers, and we know कि जो descending fibers होते हैं वो सारे motor fibers होते हैं. Like जो sensory होते हैं ना वो mainly आपके upgoing fibers होते हैं, और जो सारे all downgoing fibers, they are your motor fibers or the effector fibers. Alright, so basically abhi I'll make it all horizontal. So here 3 fibers हैं जो mainly हमारे पास आ रहे होते हैं, anteriorly present होते हैं. We know कि these circles, they are the cell bodies which are present in the cerebral cortex. Cerebral cortex से नीचे भी आ रहे होते हैं fibers. We know एक तो simple fiber, एक तो simple है जो कि यहाँ से straight away corticospinal cord में जा रहे हैं. They are known as corticospinal because obviously वो cortex से आ रहे हैं और वो spinal cord में जा रहे हैं. So hence corticospinal fibers. Then we have एक हमारे पास होते हैं corticopontine fibers. Well, this is the cerebral cortex, this is your midbrain, this is your superior colliculus, this is inferior colliculus, this is the pons, and this is the medulla and spinal cord. So the one that are coming from the cell bodies of the cerebral cortex to the pons, basically हमारे पास pons में there are pontine nuclei, वहाँ पे fibers ये like synapse करते हैं. So these are called as corticopontine fibers. ये present होते हैं, as well as third जो हमारे पास present होता है, they are corticonuclear. Nuclear, why do we call it? Because they end to the जहाँ पे nucleus present है of किसी भी nerve का, like I don't exactly remember, कोई भी जो nerve है ना, cranial nerves, वहाँ पे वो stop कर जाते हैं. So we call के वो corticonuclear fibers, and so that's how the name comes up. So these are the 3 types of fibers, descending fibers which are present, और ये सारे motor system से connected है. Hence that is why अगर हम section देखें inferior colliculus का, so you have corticospinal fibers, और laterally आपके पास corticopontine fibers होते हैं. अब इसमें भी there is a thing कि you have your frontal lobe and temporal lobe. जो medially corticopontine fibers होते हैं ना वो आ रहे होते हैं from the frontal, like they are the frontal corticopontine fibers, whereas जो laterally present है they are your temporal corticopontine fibers. Or very medially we have the corticonuclear fibers. So here I've covered the part जो कि basically substantia nigra से ahead crus cerebri वाला part है. Now I'll be talking about the part which is the all blue, the tectum part. Interesting है, it has its own story and I really would love to share it. So here this is just a picture जिसमें I've shown कि this is the nucleus जो आपके पास inferior colliculus होते हैं. We know कि ये जो level है ना ये basically inferior colliculus के level पे है. So यहाँ पर you would find inferior colliculus का nucleus. So this round blue thing is the inferior colliculus का nucleus. इसमें what I've shown is this कि यहाँ पे हमारे पास 2 nucleus होते हैं, दोनों sides पे होंगे inferior colliculus के, and they are present posteriorly. So जो inferior colliculus के nucleus होते हैं they do communicate एक दूसरे के साथ, और उसको हम कहते हैं commissure of the inferior colliculus. इसके साथ I've drawn the lateral laminiscus as well as inferior brachium, उसकी detail मैं अभी बताती हूँ. So there was another important thing I had to mention it earlier, लेकिन I'm telling it now, that is this कि जो tegmentum वाला area होता है उसमें there is the cerebral equiduct. ये cerebral equiduct show की हुई है. जो cerebral equiduct के surrounding वाला area होता है we say that that's the peri-equiductal gray matter, because it's surrounding the equiduct, so hence it's the peri-equiductal gray matter. That's it. Right, so cerebellum जो है, this is the cerebellum. ये pons है, ये medulla है, and ये midbrain है.
दिस इज सुपीरियर कॉलिकुलस, इंफीरियर कॉलिकुलस. सो वी नो कि जो सेरिबेलम से मिड ब्रेन को जो फाइबर्स कनेक्ट करते हैं, जो पेडुंकल्स जाते हैं, वी कॉल देम सुपीरियर सेरिबेलर पेडुंकल्स. एंड जस्ट लेटिंग यू ऑल गाइज नो कि जो पॉन्स वाले होते हैं वो मिडल होते हैं, और जो मेडुला वाले हैं दे आर द इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल्स. सो सेरिबेलम में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं. वन ऑफ दैम इज़ डोंट इट्स बेसिकली इस तरह के don't eat greasy food, dentate nucleus. I'll go into the details of the nucleus agar I made a video on cerebellum. So abhi ke liye just this is enough ke cerebellum mein there is a nucleus called the dentate nucleus. Dentate nucleus se fibers hote hain, they move and they pass from the superior cerebellar वाला जो area होता है उससे पास करते हैं, जो कि बेसिकली कनेक्ट कर रहे हैं मिड ब्रेन को और सेरिबेलम को. सो सुपीरियर सेरिबेलर पेडुंकल से दे गो टिल द रेड न्यूक्लियस. दिस इज़ द रेड न्यूक्लियस and I've drawn it in red. So dentate, well I've shown के dentate nucleus है, so it has teeth और ये उसके teeth हैं और ये जा रहे हैं to the red nucleus. This is just a way of how I remember this stuff. So the dentate nucleus के जो fibers होते हैं they go to the red nucleus. So hence we call it the dentorubral pathway. अब ये जो dentorubral pathway होता है इसके fibers जो होते हैं we know there are two cerebellum, दोनों cerebellum से. ये जो view है this thing is the substantia nigra. This view is just your side view, the lateral side view. अगर मैं आपको ओवरऑल प्रॉपर व्यू दिखाएं पोस्टीरियरली, सो दिस इज़ हाउ इट्स गोना अपीयर. हमारे पास यहाँ पे साइड पे सेरिबेलम है, सेरिबेलम से देयर आर डेंटेड न्यूक्लियस. डेंटेड न्यूक्लियस से फाइबर्स होते हैं, दे मूव थ्रू दी सुपीरियर सेरिबेलर पेडुंकल्स एंड दे गो टू द रेड न्यूक्लियस. और यहाँ पे डीकासेशन हो जाती है, लाइक जो डेंटेड न्यूक्लियस राइट वाले से आ रहे हैं फ्रॉम द राइट सेरिबेलम, दे गो टू द लेफ्ट रेड न्यूक्लियस, और जो लेफ्ट डेंटेड न्यूक्लियस आ रहे हैं दे गो टू द राइट red nucleus. So this is the decussation or the crossing over that takes place. Hence we say कि जो inferior colliculus का level है वहाँ पे there is this decussation that's present, and we say कि वो decussation present है of the superior cerebellar peduncles. क्यों? क्योंकि ये जो पास कर रहे हैं ना, जो हमारे पास dentate fibers जो पास करते हैं to the red nucleus, वो superior cerebellar peduncle से पास करते हैं. So this is the decussation that takes place. आप इसको decussation आदि superior ऑफ सुपीरियर सेरिबेलर पेडुंकल्स भी कह सकते हो, और यू कैन इवन से कि ये हमारे पास डेंटोरूब्रल फाइबर्स हैं और दी सेरिबेलोरूब्रल फाइबर्स बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम दी सेरिबेलम. ओके, सो दिस इज़ द डीकासेशन दैट आई हैव शोन हेयर. ये tegmentum वाले पोर्शन पे होती है और ये इस तरह रिप्रेजेंटेड है. आई हैव मेंशन कि ये डीकासेशन है ऑफ द सुपीरियर सेरिबेलर पेडुंकल्स और ये डेंटोरूब्रल फाइबर्स हैं. यू कैन से एनी, यू कैन लाइक कोई भी एक वर्ड लिखते हैं ना एग्ज़ाम्स में. एवरीवन, जो tegmentum की जो डिटेल्स हैं आई हैव मेड वेरी डिटेल, जिसमें जो मैंने काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियस वगैरह ऐड किए हुए हैं. आई वेंट थ्रू द बुक स्नेल्स, सो उसमें न्यूक्लियस की डिटेल्स इतनी मेंशन नहीं है. आई विल टेल यू व्हाट्स मेंशन इन द बुक, यू कैन जस्ट ड्रॉ दैट. लेकिन द गुड थिंग इज़ दिस, well I just don't want to flex, लेकिन I'll be explaining साथ साथ कि अगर यहाँ पे dentorubral के fibers present हैं so वो कहाँ से आ रहे हैं and their details as well. Right, so basically here I'll be explaining that how inferior colliculus जो है it is connected to lateral laminiscus anteriorly and also to inferior brachium. So here, well guys, don't judge my drawing. So this I've shown ears. So this is the external ear, फिर internal ear है, और फिर there's a part cochlea. जो cochlea part होता है वहाँ से there nucleus present है in the pons in medulla, either like इसके junction वाले point पर. So there are two nucleus. They are known as the cochlear nucleus. जो dorsally present है that's called the dorsal cochlear nucleus, and जो ventrally present है that's the ventral cochlear nucleus. So cochlea से to these nucleus basically we have a cochlear nerve जो कि cochlea से जाती है to both the nucleuses, and this is happening on both the side, right side as well as on the left side.
अब यहाँ पर जो हमारे पास कॉक्लियर नर्व जो है वो दोनों न्यूक्लियस पे जा रही है, डोर्सल एज वेल एज वेंट्रल। लेकिन व्हाट हैपेंस इज़ दिस वेरी इंटरेस्टिंग कि जो वेंट्रल न्यूक्लियस होता है यहाँ पे जो कॉक्लियर नर्व होती है ना, इट क्रिस क्रॉस लाइक इट डिकसेस, इसकी क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, और जो राइट साइड वाली होती है इट गोज़ टू द लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट साइड वाली है इट गोज़ टू द राइट साइड, एंड देयर इज़ अ क्रिस क्रॉसिंग दैट हैपन्स। अब जो यहाँ पे क्रॉस बनता है इट हैज़ ए स्पेसिफिक नेम। इतना सा जो पोर्शन है वी कॉल इट्स ए ट्रेपेजॉइड बॉडी। सो दिस इज़ द ट्रेपेजॉइड बॉडी, जो आपने और भी बहुत सारी जगहों पे पढ़ा होगा। देन व्हाट हैपन्स इज दिस कि जो ट्रेपेजॉइड बॉडी होती है इससे ऊपर फाइबर्स जाते हैं। मेक श्योर दैट जो क्रॉसिंग हो रही है ये सिर्फ ये इससे आ रही है, वेंट्रल न्यूक्लियस वाले जो फाइबर्स हैं उनकी क्रॉसिंग ओवर हो रही है, जो डोर्सल होते हैं इनकी मोस्टली नहीं होती। सो देन आफ्टर ट्रेपेजॉइड बॉडी बन जाती है, उसके बाद दीज फाइबर्स दे एक्सटेंड अपवर्ड्स और वो पॉन्स को क्रॉस करते हैं और वो मिड ब्रेन तक जाते हैं। अब जो ये वाले जो फाइबर्स ऊपर जा रहे हैं इसका एक स्पेसिफिक नेम है, इट्स कॉल्ड द लैटरल लेमिनिस्कस। ये जो फॉर्म कर रहे हैं ये लैटरल लेमिनिस्कस है, ये दोनों साइड्स पे जो हमारे पास ये लैटरल लेमिनिस्कस है। उसके बाद व्हाट रियली हैपेंस इज दिस के मिड ब्रेन में एक पोर्शन होता है जो कि हमने बहुत डिटेल में अभी किया है, विच इज़ कॉल्ड इन्फीरियर कॉलिकुलस, जो पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। जो इन्फीरियर कॉलिकुलस होता है, जो हमारे पास लैटरल लेमिनिस्कस के फाइबर्स होते हैं, दे गो टू द इन्फीरियर कॉलिकुलस, इन्फीरियर कॉलिकुलस पे जाते हैं। और उसके बाद अब जो ये हमारे पास है इन्फीरियर कॉलिकुलस, इन्फीरियर कॉलिकुलस पे लैटरल लेमिनिस्कस के फाइबर्स आ जाते हैं। और उसके बाद व्हाट हैपेंस इज़ दिस के यहाँ से, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ से ये जो ड्रॉ किया हुआ है दिस इज़ द थैलेमस। अब इससे ऊपर वाला पार्ट्स पे हम आ गए हैं। सो थैलेमस में देयर आर टू बॉडीज़, एक मीडियली प्रेजेंट होती है इसके बिल्कुल साइड पे, दैट्स कॉल्ड द मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, और एक लैटरली होती है जिस इट्स वी नॉट टॉकिंग अबाउट इट राइट नाउ, दैट्स कॉल्ड द लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। अब जो इन्फीरियर कॉलिकुलस होता है यहाँ से फाइबर्स जो हैं दे गो टू द मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, एंड दीज फाइबर्स हैज़ इट्स ओन नेम, वी कॉल के वो इन्फीरियर ब्रेकियम के फाइबर्स हैं। सो दिस वॉज इट। एंड देन मज़े की जो इसमें बात वो है ये है दैट जो लैटरल लेमिनिस्कस के फाइबर्स हैं, मेक श्योर दैट दे जस्ट गो टिल द इन्फीरियर कॉलिकुलस के लेवल तक। वो इन्फीरियर कॉलिकुलस के से आगे नहीं जाते, बिकॉज वो इन्फीरियर कॉलिकुलस पे आके टर्मिनेट कर जाते हैं, और वहाँ से जो आगे फाइबर्स जाते हैं वो इन्फीरियर ब्रेकियम के फाइबर्स हैं। सो हैंस जो लैटरल लेमिनिस्कस के फाइबर्स हैं देर जस्ट प्रेजेंट इन्फीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे। अगर यहाँ पे हमारे पास सुपीरियर कॉलिकुलस भी होता तो वहाँ तक तो वी नो कि लैटरल लेमिनिस्कस के फाइबर्स नहीं जा रहे। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट थिंग दैट द लैटरल लेमिनिस्कस इट इज़ सीन ओनली एट द inferior colliculus level, not at the superior colliculus level. So this is it about it. अब मैं previous आपको और also medial geniculate body के बाद ये जो fibers होते हैं they go to the cortex and they go to the auditory part of the cortex. Okay, so now I'll tell you कि previously मैंने आपको किस तरह explain कर किया था. So here as we all can see the section of the inferior colliculus, इसमें जो blue part है we were talking about the tectum. तो tectum में जो हमारे पास circulars हैं, this is the inferior colliculus का nucleus. So as I already talked कि जो lateral lemniscus के fibers हैं they could go till the inferior colliculus, वहाँ पे वो terminate कर जाते हैं, और फिर जो inferior colliculus से बाहर निकलते हैं they are the inferior brachium के fibers. So this is it जो मैंने आपको explain करना था. So guys, interesting thing is this that we have done Crus Cerebri ka part, we've covered it. We've covered the inferior colliculus ka part, which is the tectum part, and now we're just left with the big mess, which is tegmentum. I'll be talking about it later. Right, so after the decussation things, there are बहुत ज़्यादा important और चीज़ें हैं जो present in the tegmentum portion. That's the laminiscus. We've talked about the lateral laminiscus, and you must be thinking that we are missing very common more laminiscus that you've been hearing from the start, which is the medial laminiscus and the spinal laminiscus. So guys, don't worry, these two laminiscus, they're not far away, they're present here in the tegmentum. Now medial, as the word says medial, it's present more medially. Then you have the spinal laminiscus, and like if you go more of like laterally, this comes about the end of the section of the inferior colliculus level. अब सिर्फ हम लोगों का एक part रह गया, which is this one, the orange one, that is the
which is the interpuduncular nucleus. इसका काम खाने से है, तो I left it for the end. I don't know why. So how it works, let's go into that. So guys, the interpuduncular nucleus, it's present at the base of the tegmentum, as I've already shown you. I'll go through that over again. So basically you have the substantia nigra, or this is the tegmentum part. So it's present like bilkul either. I don't want to so it's present bilkul here at the base of the tegmentum. All right, so what it does is this, here you have your anterior as well as the posterior pituitary glands, and they are connected. वो आपको पता है hypothalamus से आ रहे होते हैं, so वो hypothalamus के साथ हैं, और ये hypothalamus है, और this is your thalamus. Okay, ये cerebral cortex है. So hypothalamus है, thalamus है, and this one is, और जो thalamus होता है इसके बिल्कुल साथ there is a nucleus. We call it habenular nucleus. Okay, so you have a habenular nucleus here, and this one orange is a perfect color to represent eating behavior, so that's why I showed it in orange. So fibers जो हैं, they go from the hypothalamus to the habenular nucleus. Habenular nucleus is present next to the thalamus, और यहाँ से fibers जा रहे थे, and then habenular nucleus से they go to the interpuduncular nucleus. This is a track, and we call it habenular interpuduncular pathway because वो habenular और interpuduncular pathway से like connected है. इसको हम fasciculus retroflexus pathway भी कहते हैं. And then what is the main function? So this interpuduncular nucleus or this entire pathway जो है, this is how your eating behavior is controlled. So that's it, guys. We are done with the section of the inferior colliculus level, and you are done with half of your midbrain. तो midbrain का भी mid हो गया है. So सिर्फ एक और section रह गया है, and then you are good to go. Good luck for your exams, and if you ever need any kind of help regarding the videos that I've made, I'm there available. I'll try to text you back, and do tell me if you like my video, and if you want me to keep on making some really good stuff like this, so please do tell. And if there are anything that's wrong, कोई गलत बात बता दी है, which you, or anything that you're not understanding, or anything that's like contradicting with your books, so do message. Okay, I will for sure look forward for that, and I'll clear out all the things out. So thank you so much, guys. Take care and good luck for your exams. Do remember me in your prayers. I'm also an MBBS student, and I really need your prayers. Bye. Thank you. All right, so after these nucleus there's another thing. This is also not that important. You can skip it if you want to. So there is a tract, but do not skip the interpuduncular nucleus वाला part जो इसके बाद में explain करूँगी. So वो होता है central tegmental tract. जो central tegmental tract होता है, this is present like इधर medial laminiscus और spinal laminiscus के दरमियान में होता है. You don't need to know exactly कहाँ पर होता है. So it's shown here in green. This is the central tegmental tract. इसकी detail में. Alright, so what is it? You don't need to know the depths. So what it does is this, that it connects the इसमें the upgoing fibers भी होते हैं, downgoing fibers भी होते हैं, लेकिन जो हमारे पास central tegmental tract होता है उसमें reticular formation से thalamus तक जो fibers जा रहे होते हैं, एक उन fibers को ये circle करते, like encircle करते हैं, as well as this is the red nucleus, or the red nucleus, and then also you know you have your medulla में there is an inferior olivary nucleus. यहाँ से downgoing fibers आ रहे हैं, and we call that that forms a rubro olivary tract. So rubro olivary tract, red nucleus और जो inferior olivary nucleus है, इनके fibers और जो thalamus और reticular formation के fibers हैं, इन दोनों को like ये encircle कर रहा होता है, and we call it central tegmental tract. That is it. Alright, so in the present
मिडल ऑफ द tegmentum you have a fasciculus जो कि है medial longitudinal fasciculus. जो medial longitudinal fasciculus है वो एक्चुअली इंटरकनेक्शन है, इन सब चीज़ों को कॉन्जुगेट मूवमेंट के लिए हेल्प करता है. वो थर्ड नर्व, फोर्थ नर्व, सिक्स नर्व न्यूक्लियस एज वेल एज जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है, इन सब की लाइक कोऑर्डिनेट मूवमेंट करवाता है. ओके, सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल वेसिकुलस और दिस इज़ वेयर इट इज़ प्रेजेंट इधर. ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वी हैव द न्यूक्लियस. हमारे पास फोर्थ नर्व इज़ प्रेजेंट इस जगह पर inferior colliculus लेवल पे. सो inferior colliculus में tegmentum पे जस्ट बिल्कुल यहाँ पर जो हमारे पास ऊपर वाला पार्ट है दैट्स दी tectum. तो tectum और tegmentum में very medially like just close to the cerebral equiduct you have the fourth nerve nucleus which is the trochlear nerve. Up to trochlear nerve it is the only nerve. This is a very important point, you guys must remember it. जो बाकी सारी nerves हैं कोई भी nerve पीछे से होकर पास नहीं करती. ट्रॉक्लियर नर्व इज़ द ओनली नर्व जो पीछे से होकर पास करती है और ये यहाँ पे लाइक क्रॉस ओवर कर जाती है. इट डी का सेज इधर पे, दिस वन लाइक गोज हेयर देन इधर फिर यहाँ से यहाँ पर आ जाती है. सो द ट्रॉक्लियर नर्व इट इज़ द ओनली नर्व जिसके फाइबर्स जो है इट एग्जिट फ्रॉम द बैक ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. और ट्रॉक्लियर नर्व जो है इट सप्लाइज one of the extraocular muscle जो कि हमारे पास superior oblique muscle होती है. And you can even remember it from this कि we know कि SO4 से remember कर लो like superior oblique which is supplied by the fourth cranial nerve. Alright, so then we have another nucleus जो कि हमारे पास we know कि जो हमारे पास trigeminal होता है. सो आई जस्ट गिव एन ओवरव्यू ट्राइजेमिनल नर्व के बारे में भी. उसमें बेसिक ये बात है दैट जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसमें यू हैव एक स्पाइनल न्यूक्लियस होता है और जो स्पाइनल और एक मिड पॉन्टाइन न्यूक्लियस होता है. जो मिड पॉन्टाइन न्यूक्लियस होता है वो पॉन्स के लेवल पे प्रेजेंट होता है. ये पॉन्स है, ठीक है, एंड दिस इज़ दी मेडुला, ये स्पाइनल कॉर्ड है. और ये जो ऊपर है ना ये वाला लाइक दिस वन यही मिड ब्रेन है. सो जो हमारे पास मिड पॉन्टाइन न्यूक्लियस होता है ना इट इज़ प्रेजेंट मिडल ऑफ द पॉन्स पे. मिड पॉन्टाइन न्यूक्लियस होता है जो कि ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस सिस्टम का पार्ट है. सो दिस मिड पॉन्टाइन न्यूक्लियस इसके जो नीचे होता है बहुत लाइक एक्सटेंड कर रहा होता है दैट्स द स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व सारा सिस्टम. और जो ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर रहा है वो वाला जो होता है वो मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस होता है. हेंस जो मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस है वो मिड ब्रेन वाले पोर्शन में होता है. तो मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस होगा इट वुड बी प्रेजेंट एट इधर जो हम लोगों ने अभी सेक्शंस देखे हैं. सो दिस इज़ योर मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस और या सो ये मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस जो इट वुड बी प्रेजेंट एट इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे. दैन वी हैव अदर न्यूक्लियस जो कि एक होता है लोकस कोरिलस. You don't just forget about it. You don't need to know this. It's not mentioned in Snell's as well. और जो न्यूक्लियस है अब these न्यूक्लियस जिसकी मैं अभी बात कर रही हूँ this is not mentioned in Snell's. अगर आप ये ना भी करें it's completely okay. You can skip this part if you feel like. So there are just एक नोहा ले लो that there is a nucleus raphi और एक सेंट्रल टेगमेंटल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और देयर इज़ LC न्यूक्लियस लोकस कोरिलियस न्यूक्लियस आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट. सो एंड देन एक और सेंट्रल टेगमेंटल ट्रैक होता है. न्यूक्लियस वाला पोर्शन यू गाइस कैन स्किप और बट उसके आगे आई विल बी टॉकिंग अबाउट अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियस जो कि हमारे पास इंटरप्यूडंकुलर न्यूक्लियस है. दैट्स इंपॉर्टेंट, वो ड्राइंग्स वगैरह में मेंशन कर दिया करो. बट अभी आई विल बी टेलिंग यू गाइस अबाउट I'll be going into the details of Yevon nucleus which are not so important. Alright, so first starting off with locus coeruleus, let's say LC. So LC जो है ये हमारे पास this is a portion जो कि pons का portion है. pons के portion में हमारे पास there is fourth ventricle. तो ये fourth ventricle show किया हुआ है और अब ये fourth ventricle में फोर्थ वेंट्रिकल की डेप्थ में नहीं जाऊंगी, सिर्फ ये बताऊंगी दैट ये दिस इज़ फेशियल कॉलिकुलस होता है. फेशियल कॉलिकुलस से ऊपर जो हमारे पास एक एमिनेंस जा रही थी उसे कहते हैं मीडियल एमिनेंस. और जो मीडियल एमिनेंस के जो बिल्कुल इसके जो मिडल में ये जो लाइन है ना
This is called as the median sulcus. ओके, इट्स लॉन्गिट्यूशनल एक डिप्रेशन टाइप होता है, और इसके साइड्स पे यहाँ से जो फेशियल कॉलिकुलस से ऊपर जो हमारे पास जा रहा है वो मीडियल एमिनेंस है, और मीडियल एमिनेंस को जो स्काई ब्लू कलर से आई रिप्रेजेंटेड, दैट्स अ डिप्रेशन, जो कि बेसिकली सल्कस लिमिटेंस है. अब सर्कस लिमिटेंस, इनके ना ऊपर कुछ स्वेलिंग्स टाइप होते हैं, वी कॉल देम, एक न्यूक्लियस होता है, दैट्स द एलसी न्यूक्लियस. व्हाट दिस न्यूक्लियस डज इज़ दिस के ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं और वो नॉर एड्रीनर्जिक सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं. ओके, सो कवरिंग, वी डन विद LC1. Next we have the central tegmental nucleus and the Raffi nucleus. Both of them have the same function, hence they are shown in pink. So isme the thing is this, that you have your, this is the spinal cord, this is your medulla, this is pons, and this is the midbrain. Okay, so spinal cord में what happens is this, that spinal cord में हमारे पास जो pain fibers होते हैं ना, they come और वो इधर dorsal grey matter का जो horn है posterior वाला, उस पे आके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स लाइक फिनिश हो जाते हैं. ठीक है, वहाँ से ना सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स स्टार्ट होते हैं, और जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स स्टार्ट होते हैं वो एक्चुअल में इस तरह होता है दैट इग्नोर द पिंक वंस, जस्ट फोकस रेड वाली लाइन पे. सो यहाँ से जो रेड वाला है ना, ये स्टार्ट होगा, और ये जो मैंने इस तरह राइट वाले जो पेन फाइबर्स थे ना, यहाँ से मूव करते हैं एंड दे गो टू द लेफ़्ट साइड एंड दे गो टू हेयर, और वो इधर लैटरल वाइट मैटर वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आ जाते हैं, और जो ये वाले जो पेन रिसेप्टर्स हैं ये यहाँ पे फिनिश कर जाते हैं फर्स्ट वाले, और यहाँ से सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है, सब्सटेंशिया गैलेटिनोसा, और वहाँ से वो स्टार्ट करते हैं सेकंड वाले, और वो इधर से क्रॉस करके दे मूव टू द इधर इस साइड पर, और वो इस साइड पे आके यहाँ पर लैटरल वाले वाइट मैटर वाले एरिया में आते हैं, एंड देन दे असेंड अपवर्ड्स. ऊपर जाते हैं जब, so this is the lateral spinothalamic pathway, because we know कि जो pain receptors होते हैं they follow the lateral spinothalamic pathway. So ये lateral spinothalamic pathway होता है, और then they go upwards to the VPL, thalamus पे जाते हैं, और वो spinal laminiscus blah 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 उसके तो जाते हैं, उसकी depth is not required. What is the function of the Raffi nucleus and the central tegmental nucleus? It's this कि इनके जो fibers होते हैं ना, ये terminate करते हैं बिल्कुल यहाँ पर, जहाँ पर पेन फाइबर्स जो होते हैं, वेयर दी एंटर द स्पाइनल कॉर्ड, लाइक इस पॉइंट पे, दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे रैफी न्यूक्लियस और सेंट्रल टेगमेंटल न्यूक्लियस के फाइबर्स जो होते हैं ये आ रहे होते हैं, एंड दे टर्मिनेट इस पॉइंट पे. अब व्हेन दे टर्मिनेट इस पॉइंट पे, व्हाट डू दे डू इज़ दिस, दैट दे रिलीज सम एंडोजेनस मॉर्फिन लाइक सब्सटेंसेस, और वो एनकेफेलिन्स भी होते हैं, सेरोटोनिन भी होता है. सेरोटोनिन जो होता है इट इज़ रिलीज मेनली बाय Raffi nucleus. So they release this, और इनका क्या function है, जो morphine like substances होते हैं, what they do is this, that they inhibit the pain transmission at the point of the entry, because ये fibers बिल्कुल यहाँ पर आके terminate कर रहे हैं. So इससे what happens is that आपकी जो pain की sensations होती हैं वो आपको कम feel होती हैं. Okay, so this is about the Raffi and the central tegmental nucleus. Alright, so ये dorsal column medial laminiscus system है, इसमें जो medially fibers present होते हैं, and ये हमारे पास gracilis होते हैं. I won't be going into the detail, किसी और वीडियो में I hope I do explain it, लेकिन इसमें basically gracilis होता है, और which are present medially, फिर cuneatus होता है जो medulla और pons पे यहाँ पे इनकी decussation होती है, और फिर these fibers they extend ऊपर की तरफ, और जब ये midbrain से पास करते हैं, here you can see they're passing from the midbrain. So because ये, और फिर उसके बाद they go to the VPL, फिर into the cerebral cortex. मैंने overview दिया है, तो इधर जो midbrain वाला portion है, we're talking about this कि ये midbrain वाले portion से भी dorsal laminiscus fibers जो हैं, dorsal column medial laminiscus fibers वो pass कर रहे हैं, and this is the medial laminiscus that we're going to talk about in आगे वाली pictures में. So we know there's dorsal laminiscus, and there's one more laminiscus, which is the spinal laminiscus.
जो स्पाइनल लेमिनिस्कस है उसमें बेसिकली इस तरह होता है दैट देयर इज़ एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक, लैटरल स्पाइनोथैलेमिक, जो एंटीरियर हॉर्न से आ रहा है वो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक है, लैटरल से जो है वो लैटरल स्पाइनोथैलेमिक है, एंड द वन विच इज़ कमिंग फ्रॉम इन बिटवीन बोथ ऑफ दीज उसका नाम है टेक्टल स्पाइनोथैलेमिक पाथवे। दीज थ्री दे गो मेडुला में जाके कहीं मिडल ऑफ द मेडुला में सारे मिल जाते हैं और ये सारे मिलकर दे फॉर्म ए स्पाइनल लेमिनिस्कस। जो स्पाइनल लेमिनिस्कस है वी कैन सी कि ये पॉन्स वाले लेवल्स पे और काफ़ी हद तक मेडुला में भी एंड मिड ब्रेन में भी इट गोज़ एज वन सिंगल बंडल, ये तीनों फाइबर्स, एंड दैट्स दी स्पाइनल लेमिनिस्कस। उसके बाद गोज़ टू द थैलेमस, बीपीएल, पोस्टीरियर लिम्ब एंड देन इधर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में थ्रू कोरोना रेडिएटा। अब उन्हीं फाइबर्स की अगर मैं बहुत ही प्रिसाइज ड्राइंग करके कॉम्पैक्ट सी बनाई है, इसमें दिस वन ये जो है ये हमारे पास मीडियल लेमिनिस्कस के फाइबर्स हैं, और जो मीडियल लेमिनिस्कस के फाइबर्स हैं दे प्रेजेंट वेरी मीडियली और ये थैलेमस में जा रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जो लैटरल लेमिनिस्कस है वो आपके पास एंटीरियर हॉर्न से इधर, और जो एंटीरियर पार्ट ऑफ द ग्रे मैटर ऑफ द वाइट मैटर सॉरी, और जो लैटरल वाला है वो लैटरल पार्ट ऑफ द वाइट मैटर से यहाँ से आके और ये यहाँ पे कन्वर्ट मिल जाते हैं और वो फॉर्म कर देते हैं स्पाइनल लेमिनिस्कस। और ये जो हमारे पास मिड ब्रेन वाला पोर्शन है दिस इज़ दी सुपीरियर कॉलिकुलस, ये इन्फीरियर कॉलिकुलस है। सो ये हमारे पास जो लेमिनिस्कस है ना स्पाइनल लेमिनिस्कस, बिकॉज वी नो कि जो मीडियल लेमिनिस्कस और स्पाइनल लेमिनिस्कस हैं दे बोथ गो टिल दी थैलेमस। थैलेमस में जो एरिया होता है ना VPL वहाँ पे दोनों जाते हैं। सो इसी वजह से द थिंग इज़ दिस दैट जो मीडियल लेमिनिस्कस और स्पाइनल लेमिनिस्कस है दे वुड बी प्रेजेंट एट बोथ द लेवल्स। इन्फीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे भी नज़र आएंगे और सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे भी नज़र आएंगे, लेकिन जो लैटरल लेमिनिस्कस है वो सिर्फ और सिर्फ इन्फीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे विजिबल होगा, नॉट इन द सुपीरियर कॉलिकुलस लेवल। आई हैव एक्सप्लेन्ड हाउ वाई किस तरह इन पहले इन द वीडियो। इफ़ दैट्स नॉट क्लियर text me, I'll try to reply you guys. So yeah, there's it. So referring it with our original video, we can see कि medial lemniscus जो है it is present here most medially, then you have the spinal lemniscus and then this is the lateral lemniscus.